cycle, project stakeholders, organizational influences, and key management skills are the context for the project management. Project life cycle. The project life cycle serves to define the beginning and end of a project. Each project phase is marked by completion of one or more deliverables. A deliverable is a tangible, verifiable work product such as feasibility study, a detailed design, or a working prototype. This is a generic life cycle for projects. There is an initial phase. Now it's only showing cost and staffing level, but there could be other ordinates over here. Initial phase, intermediate phase, and the final phase. This is how the staffing and the cost in the project goes on from the initial phase to the final phases. The level of uncertainty is highest, and hence the risk of failing to achieve the objectives is greatest at the start of the project. So issue is, I keep saying all this, if something has to fail in the project, it must fail as soon as possible in the project. Right? If it fails later, then there's a lot more money at stake. So therefore, you must explore all options in the initial stages of planning in the project, so that if a failure has to come, that the failure must not take a lot of money of yours. The certainty, failure design की वजह से या execution? किसी वजह से भी हो सकता है ना. फेलियर तो आपने कोई ऐसी चीज़ हो गई जिसकी वजह से आप समझते हैं कि फेलियर हो जाएगा. तो you must always expect, and you must always foresee, and you must always plan that the failure comes in as soon as possible in the project. सर फेलियर सिर्फ कॉस्ट के लिहाज से होगा या और कोई? नहीं, कोई भी फेलियर हो सकता है. टेक्निकल फेलियर भी हो सकता है ना. हर चीज़ लेकिन कॉस्ट को इम्पैक्ट करती है. जो भी फेलियर होता है प्रोजेक्ट में, इट इम्पैक्ट्स द कॉस्ट, राइट? So therefore, in order to reduce the cost in the project, you must, expect a failure as soon as possible. If the failure comes in late, then, for example, आपने कोई चीज़ डिज़ाइन की है, गाड़ी डिज़ाइन की है, और गाड़ी को आपने डिज़ाइन किया कि आप गाड़ी का एक पर्टिकुलर इंजन की कैपेसिटी होगी, राइट? आपने सारा कुछ बना दिया, उस इंजन के अराउंड आपने गाड़ी डिज़ाइन कर दी. फिर उसके बाद आपने जब सब कुछ तैयार हो गया और आपने इंजन लगाने की बारी आई, तो आपको पता चला कि ये इंजन है, ये इस गाड़ी को या अवेलेबल ही नहीं है. फॉर एग्जांपल, जो कंपनी इंजन बनाने वाली थी ना, उसने उसे ऑब्सोलीट कर दिया कि हम ये नहीं बनाते. या कोई टेक्निकल फॉल्ट डेवलप हो गई उस इंजन में, जिसकी वजह से उसमें रीवर्क की ज़रूरत पड़ गई. ठीक, तो दिस इज़ अ फेलियर इन द प्रोजेक्ट. सो यू मस्ट एक्सपेक्ट फेलियर्स जो हैं जल्द से जल्द आ जाए. प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स. Project stakeholders are individuals and organizations who are actively involved in the project or whose interest may be positively or negatively affected as a result of the project execution or successful project completion. The project management team must identify the stakeholders, determine what their needs and expectations are, and then manage and influence these expectations to ensure a successful project. Employers competitor can be stakeholders. जी, Employers के जो competitors होते हैं वो भी stakeholders होते हैं. जी, stakeholders हर किस्म के होते हैं. बताएंगे आपको कौन कौन से stakeholders होते हैं. Project stakeholders are individuals and organizations who are actively involved in the project or whose interest may be positively or negatively affected as a result of the project execution or successful project completion. The project management team must identify the stakeholders, determine what their needs and expectations are, and then manage and influence those expectations to ensure a successful project. मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं इसको